Dear students, today I am just going to deliver a very important topic for the chapter 9, that is plant breeding or improvement in the food resources. आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं that topic is very important for your both type of examination like NEET examination and the theory examination for the CBSE and the state board both. I'm just going to discuss the topic. I'm just going to handle the topic today, that is tissue culture technique. Tissue culture, tissue and culture, two different words are there. So one by one we are just going to understand the meaning of these words. Tissue culture or cell culture or plant culture, all the things are very much common. The word culture is very much important. Whatever the initial word, either cell or tissue is there, that has to be cultured thereon. So what is the meaning of culture, we'll understand in the further topic, in the further lecture. So just try to understand this, try to understand ki why this technique is being useful, why we are using such kind of the techniques when we are already having some of the plant breeding program that we have discussed in our earlier lectures. हमने पहले ये देख लिया है कि हमारे पास में बहुत सारे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम अवेलेबल हैं और उसके बाद भी हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं. तो इस टिश्यू कल्चर टेक्निक की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक. So before proceeding toward that, we must understand what is the meaning of tissue culture. Tissue culture or cell culture. Culture का मतलब होता है to enhance the growth in a controlled medium. Culture का सीधा मतलब होता है कि हम किसी controlled medium, in a controlled situation, we need to enhance the growth of the particular plant part, the particular cell or particular tissue or the particular structure, whatever is undergone in the process of कल्चरिंग. सो समझ में आ रहा है टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कल्चरिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज. सो कल्चरिंग का मतलब क्या होगा, टू इनहैंस द प्रोडक्शन. टू इनहैंस द प्रोडक्शन मीन्स हाउ द प्रोडक्शन कैन बी इनहैंस्ड. प्रोडक्शन कैन बी इनहैंस्ड ओनली by providing the adequate nutrient supply, adequate temperature, adequate moisture, everything. The stress less growth of the plant part or tissues or cell can be managed by the culture. And when we are able to provide all such conditions, all such situations normally to the plant part, so definitely the plant part will be able to grow maximum at its maximum pace. So under controlled condition, plant का या cell का या tissue का maximum growth ensure कराना in a short time period is called as culture. So tissue culture, cell culture. So now we are just moving on to the concept ki why this tissue culture technique is being useful, why this tissue culture technique is being desirable, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है tissue culture technique की. So my dear child, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि we are having so many breeding practices, traditional breeding programs launch किए हैं, intervarietal hybridization, so many plant breeding program, animal breeding program we have applied for increasing the productivity for the consumption of the humans. हमारे देश में, पूरे दुनिया में, the population of human is increasing day by day and we are suffering to manage the supply of all the food items, all the nutrients to all the peoples of the population. और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था और उसी चैलेंज से निपटने के लिए we have applied or we have adopted some of the practices. Those practices are called as plant breeding program. हमने hybridization experiment किया, everything we did, but the problem is that the traditional plant breeding program cannot fulfill the pace of demand of the human population. जिस तेजी से human population में demand आ रही है इन चीजों की, the traditional breeding program cannot keep the pace up. So traditional breeding programs fail to keep the pace of the डिमांड ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. जितनी तेजी से, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, फ्रूट्स की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, क्रॉप्स की ज़रूरत है, सीरियल ग्रेन्स की ज़रूरत है, दिस इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट पेस ऑफ द डिमांड ऑफ ह्यूमन. It cannot provide the fast and efficient system of the crop improvement. This is another disadvantage of the traditional breeding program. Traditional breeding program can improvise the breeding practices, can improvise the seeds, can improvise the hybrid varieties, but it cannot provide the fast and efficient system of the crop improvement. जितनी तेजी से हमको आज के टाइम में क्रॉप की जरूरत है, that speed of the crop improvement cannot be maintained by the traditional breeding program. So now, by increasing the human population day by day, demand is taking the peak
every day. So how can we manage that kind of the demand? कैसे हम लोगों की भूख को शांत कर पाएंगे, किस तरीके से हम डिजायर को शांत कर पाएंगे, किस तरीके से हम उस नीड को फुलफिल कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे. द रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन द सेम फील्ड एंड द चैलेंज इज दैट कि by increasing the human population we are reducing the land surfaces available for the farming. So this is once again a big challenge for the researchers. So researchers have applied some of the practices by which they are able to produce more and more number of the new plants with the desired characteristic in the limited time period. So this is what the solution of the above problem. Solution of the above problem मतलब एक तो डिमांड की पेस को मेंटेन करने में फेल रहा ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम, और फास्ट और इफिशिएंट सिस्टम ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द traditional breeding program. So that program is being provided, the solution for such kind of the problem is being provided by the tissue culture technique. Tissue culture technique, before some time only I have just explained what is the tissue culture. What limited time period में maximum growth of the plant has to be ensured, that is called as culture. Tissue का culture करना under the aseptic condition, under the desired condition. So remember my dear child, the very important line I'm just going to discuss, this technique occupies a key role in second green revolution. My dear child, you know very well in the previous topic I have discussed the green revolution means what? Improving the varieties of the seed of the grain so that the improved yield of the crop. But that was the first phase of the green revolution. Now we need to pace up the productivity, we need to pace up the desired quality. For that the tissue culture technique has providing a key role in the second green revolution. So that is what is written here, the technique occupies a key role in the second green revolution. How it can be done? It is by improving the crop production and quality. Earlier also in the green revolution, first of all the green revolution was achieved by improving the varieties of the seeds, and here also we are improving the varieties of seeds along with the quality of seed. So tissue culture technique is very important and playing a key role there in the second green revolution. The tissue culture technique is very useful in the production of the haploids. Many of the time this is very much required कि हमको haploid cells की जरूरत होती है to ensure the safe characteristic, to ensure the beneficial characteristic. A particular type of characteristic can be preserved or can be conserved by the haploid सेल प्रोडक्शन. वायरस फ्री प्लांट हम इस समय फेस कर रहे हैं, द सिचुएशन वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, द फार्मर्स आर फेसिंग सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स. द प्लांट्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द पैथोजेंस बेसिकली फ्रॉम द वायरस. द प्लांट्स आर बेसिकली अटैक्ड फ्रॉम और अफेक्टेड बाय द वायरसेस. सो वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच डिजीज प्लांट. दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक. द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, टू डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कैन बी फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस अ hybrid. The soma clonal variation, the somatic cell may show the variations, embryo rescue, so many things are there. So now moving on to the definition, what could be the definition? How can we define the tissue culture technique? So my dear child, already I have just defined culture का मतलब to ensure the maximum production under the controlled condition. So what is the tissue culture? It is the maintenance of growth of the plant cells, tissues, organs on a suitable culture medium in vitro. You know very well in vitro means outside of the body, inside a glass medium, any of the medium inside the laboratory. So it is the maintenance and growth of the plant cells or tissues or organs. किसी भी प्लांट सेल का टिश्यू आर्गन को उठाया, उसको ग्रोथ कराते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ अंडर द सुटेबल कल्चर मीडियम इन विट्रो. रिमेंबर द प्रोसेस इज नॉट इन वाइवो, दिस इज इन विट्रो प्रोसेस. सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कल्चर का सीधा मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना इन विट्रो सिचुएशन में बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, एडिक्वेट टेम्परेचर, पीएच, एवरीथिंग. तो उसी के कारण उसकी ग्रोथ मैक्सिमम परमिट हो सकती है. सो रिमेंबर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन द topics and the concept of the tissue culture technique. So for the beginning of that, एक्सप्लांट एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है एक्सप्लांट.
एक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल प्लांट, मतलब प्लांट. सो एक्सप्लांट मीन्स व्हाट, इट इज अ प्लांट पार्ट विच कैन बी एक्साइज्ड. एक्स मतलब बाहर निकालना. सो इट इज अ प्लांट पार्ट विच कैन बी एक्साइज्ड फ्रॉम द मेजर प्लांट और पेरेंट प्लांट एंड कैन अंडरगो इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक. सो बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है. द प्लांट पार्ट विच इज अंडरगोन इन द कल्चर टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट. सो द प्लांट पार्ट विच इज टेकन out and grown out in the test tube under the sterile condition in specific nutrient medium is called as explant. Are you getting my point? X मतलब excised, plant मतलब plant. So plant का वो part जो excise करके अलग किया गया that is called as explant. So the plant part which is taken out, excised and grown outside in the outside of the body means test tube under the sterile condition, disease free condition in a specific nutrient medium. IA means what? The plant part which is cultured is called as explant. Is it clear to you all? My dear child, एक बहुत important concept है totipotency. You knows very well earlier also many of the time we have discussed the concept of totipotency. Toti, once again in my terms, toti means total, potency means potential. Two different terms are there. These two different terms are close together, are combined together. Toti means total, potency means potential. So any of the explant or if any of the plant cell or tissue, if it is having capacity to generate the complete plant structure or complete animal structure or complete structure of the body or adult, then the capacity is called as totipotency. So what is totipotency? The capacity to generate the whole plant body from the explant or any of the cell or tissue. So is it clear? Capacity to generate the whole plant from the explant or the cell. So this is what totipotency. Moving on to the next point of the tissue culture technique. The next term what we have to discuss is micropropagation. Micro small scale propagation means what? In very short duration, maximum number of the plants can be produced. That process is called as micropropagation. What is micropropagation? In very short duration, if maximum number of the plants can be produced, thousands of the new plants can be produced in a short duration by the tissue culture technique that is called as micropropagation. Are you getting my point? In very short duration, the great number of the new plants can be achieved by the tissue culture technique that is called as micropropagation. So production of the large number of the new plants in very short duration through the tissue culture technique is called as micropropagation. So is it clear to you all? My dear child, we are now further moving on to the conditions what are required for the tissue culture technique or cell culture technique. There are three basic conditions required for the tissue culture technique. One is called as nutrient, second one is sterilization, and third one is aeration of the tissues. So one by one we are just going to discuss. So first of all, the first condition for the tissue culture technique is nutrient medium. Remember, after that we'll see the sterilization, and third one is the aeration of the tissues. The first condition is nutrient medium. So what is nutrient? You know very well, the materials which can provide the nutrition or energy for the development of the body, that is called as nutrient. And here we have just taken out the cell in form of explant, and explant has to convert in form of the complete plant. So the materials which are needed for providing the desired growth and development to the explant is called as nutrient medium. So this medium is required to provide nutrition for the desired development of explant. So is it clear? This nutrient medium is also called as the culture solution. The nutrient medium is also called as the culture solution. Remember my dear child, so nutrient medium, nutrient se bana hua medium, this is a kind of solution which is having all sort of the nutrient which can provide the desired development for the explant. Because the culture is being taking place in that solution only, so that is why this is also called as the culture solution. So what is that? Remember, क्या हो सकता है इस nutrient medium में? Nutrient medium must contain, remember this is very important point, the nutrient medium must contain a carbon source. Carbon source, remember, whenever the carbon source is there, the carbon source is always utilized for providing the energy. So nutrient medium contains a carbon source. That carbon source is sucrose usually. That sucrose is used for providing energy for the development of the explant. Some inorganic salts also present, vitamins, amino acid, growth regulators, whatever is required for the proper development of the explant or the new tissue is being provided into the nutrient medium. But remember, the carbon source is needed for providing energy. Basically, the sucrose is used here.
inorganic salt, vitamins, amino acids, growth regulators. What are these growth regulators are present here in the nutrient medium? Basically the plant hormones are working as the growth regulator. We knows very well in the previous topics we have discussed the growth regulators. Basically three types of growth regulators are there. The auxin is present, growth hormone. Auxin is growth hormone that is present in form of major form of that 2,4-D. Cytokinin is present in form of BAP, benzoyl aminopurine. Gibberellin is present in form of gibberellic acid third, GA3. So these are the growth regulator present. The medium base may be liquid or the solid. It is depending upon the mode of culture. Most of the time the base is in form of the gel, so the agarose gel is being utilized here in form of the base. The temperature is required, that is 24 degrees centigrade. The pH of the medium should be, or pH during the tissue culture technique or the medium is 5 to 6. Basically on an average that must be 5.7. So this is what the nutrient medium which provide the nutrition and the growth regulators for the purpose of the proper growth and development of the explant. Moving on to the next requirement, that is sterilization. Next requirement for the tissue culture technique is sterilization. You knows very well, my dear child, making the conditions germ free is called as sterilization. किसी भी atmosphere को, किसी भी environment को germ free बनाना is called as sterilization practices. So making the media, that is we have discussed just now, making the nutrient media, instruments, vessels, whatever is being utilized during the tissue culture technique. Remember, this is highly expensive technique, highly expertized technique. अगर यहाँ पे किसी भी तरीके का infection हुआ, किसी भी तरीके की adverse condition develop हुई, the complete process of tissue culture will get fail. So to avoid such kind of the failure, we need to take care of each and every precaution. और उसमें सबसे पहली जरूरत क्या होती है? स्टेरिलाइज करने की. So the sterilization process का मतलब complete instruments को, complete nutrient medium को, एक्सप्लांट को, सभी को जर्म फ्री करना है, सेप्टिक बनाना, स्टेरिलाइज कर देना. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टेरिलाइजेशन. द फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द पर्पस ऑफ टिश्यू कल्चर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लांट, हैज टू बी अंडरगोन इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन. सबसे पहले किसको अपन स्टेरिलाइज करेंगे? एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करेंगे. फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट व्हाट इज रिक्वायर्ड? स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स आर रिक्वायर्ड. द एक्सप्लांट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज टू बी ट्रीटेड विद some of the antimicrobial substance की. if any kind of the microbes or pathogens are present on the explant, अगर कोई भी पैथोजन प्रेजेंट है एक्सप्लांट में तो उस पैथोजन को वहां से रिमूव किया जाए. उसको रिमूव करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस का यूज करेंगे. एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करने की प्रोसेस को हम कहते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन. समझ में आएगा? एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करने की प्रोसेस कहलाएगी सरफेस स्टेरिलाइजेशन. सबसे पहले एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज करेंगे. उसके बाद में नंबर आता है बाकी सारी डिवाइसेस का, चाहे वो ग्लासवेयर हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, सभी को स्टेरिलाइज करना होता है. उस स्टेरिलाइजेशन के लिए या तो अपन हीट प्रोवाइड करते हैं, स्टीम प्रोवाइड करते हैं, ड्राई हीट देते हैं, अल्कोहल से ट्रीट करते हैं, जिससे वो सरफेस पूरी तरीके से फ्री ऑफ इंफेक्शन हो जाए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? all the vessels, all the instruments, all the media, whatever is being used during the tissue culture technique are being sterilized. कैसे स्टेरिलाइज करेंगे? या तो स्टीम प्रोवाइड करेंगे, या तो ड्राई हीट देंगे गर्म करके, या अल्कोहल से ट्रीट करेंगे. बेसिकली एथेनॉल 70% एथेनॉल कैन बी यूज देयर. एथेनॉल से ट्रीट करेंगे और उसको पूरी तरीके से फ्री ऑफ इंफेक्शन, फ्री ऑफ जर्म डेवलप करेंगे. दैट कंडीशन और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन. समझ में आया? सरफेस स्टेरिलाइजेशन केवल एक्सप्लांट को एंटीमाइक्रोबियल केमिकल से ट्रीट करना, सरफेस स्टेरिलाइजेशन, और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मीडिया और कल्चर सॉल्यूशंस को ट्रीट करना, स्टेरिलाइज करना इज कॉल्ड एज कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन. सो दिस इज व्हाट द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक. Next, when we are moving ahead, is aeration of the tissue. That is the third requirement of the third requirement for the tissue culture technique. The aeration of tissue, simply whatever the culture medium is there, that culture medium should be maintained with the continuous supply of the air, so that it could provide the fresh supply of the oxygen for the purpose of proper growth and development of the explant, to ensure the successful completion of the tissue culture technique. Now we are moving on to the methods of the plant tissue culture.
There are two methods of the plant tissue culture. First one is the method in vitro growth. In vitro growth मतलब body से बाहर explant को निकालना, किसी glassware में उसको develop कराना. And second one is based on the types of explant कि किस type या किस part of explant को अपन use कर रहे हैं. In vitro growth में दो तरीके की method use करते हैं. One is called as callus culture, another one is called as suspension culture. जब टाइप्स ऑफ एक्सप्लांट के बेस पे अपन टिश्यू कल्चर मेथड को समझते हैं तो यहाँ पे मेरिस्टेम कल्चर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कल्चर करना, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन कराना, प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहलाएगा, एम्ब्रियो का कल्चर एंड मैनी मोर वी आर हैविंग. सो वी आर जस्ट गोइंग टू सी ऑल दीज वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द कैलस कल्चर. कैलस कल्चर कल्चर आप जानते हो, बार बार आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द वर्ड कैलस कल्चर. कल्चर कल्चर का मतलब मैक्सिमम ग्रोथ अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन. अब कंट्रोल्ड कंडीशन क्या, वो अभी आपने ऊपर देख लिया. एरेशन मेंटेन करना, स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करना और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, टेम्परेचर और पीएच देना, ये सारी कंट्रोल्ड कंडीशन होंगी जिन कंडीशंस के कारण ही प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंटेन होगा. अब कैलस कल्चर में क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड. कैलस कल्चर बेसिकली ए जेल बेस्ड कल्चर इज देयर. कैलस कल्चर एक पूरी तरीके से जेल बेस्ड कल्चर है. So before moving on to the callus culture, we must understand what is callus. Callus जब सेल डिवीजन शुरू होता है तो इनिशियली ऑल द सेल्स आर टोटीपोटेंट सेल and by increasing the number of totipotent cell they are going to make the group of cells there on the surface of the culture solution, culture base. So that group of undifferentiated cell or mass of undifferentiated cell is called as callus. So cell division in the explant leads to form the an undifferentiated mass of cell called callus. So ये समझ में आ रहा है अपने को. What is callus? Callus is group of undifferentiated cell or mass of undifferentiated cell present in the solution base or culture medium, that is called as callus. तो जहां callus का formation होगा that culture is called as callus culture. यहां ध्यान रखने की बात है, in that culture the gel base is used and all the cells after division are going to accumulate in form of the in form of the callus. So this is what this is called as the callus culture. Remember, maintained on the agarose gel medium. This medium must contain the auxin एंड साइटोकाइनिन. हम पहले ही देख चुके हैं ऑक्सिन किस फॉर्म में रहेगा, ग्रोथ रेगुलेटर में 2,4-D के फॉर्म में रहेगा. एंड साइटोकाइनिन इज बेसिकली इन फॉर्म ऑफ बेंजोइल एमिनोप्यूरिन, दैट इज BAP, बेंजोइल एमिनोप्यूरिन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सस्पेंशन कल्चर. सस्पेंशन कल्चर में इंडिविजुअल सेल या टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है. देयर इज नो ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास इज प्रोड्यूस, मींस कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा, सभी इंडिपेंडेंटली सस्पेंडेड रहेंगे इन द सस्पेंशन. सो हियर सस्पेंशन मींस व्हाट, अ लिक्विड मीडियम ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड, नॉट जेल बेस. दिस इज अ लिक्विड बेस्ड सॉल्यूशन इज देयर. सो एक्सप्लांट इज सस्पेंडेड इनटू द लिक्विड मीडियम, नॉट द जेल मीडियम. एगरोस जेल का यूज नहीं करेंगे. दिस इज हियर व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर, दैट इज लिक्विड मीडियम. And there is no aggregation of the mass of cell is observed और callus का formation यहाँ पे नहीं होगा. Remember, to maintain the cell away from each other, agitation is required. लगातार उनको हिलाते रहना जरूरी है और उस agitation के लिए we need to use the centrifugal technique. The continuously agitation is required. The agitation must be maintained at the speed of 100 to 250 RPM. The explant is suspended into the liquid medium which contains the auxin and constantly agitated. Agitated का मतलब हिलाते रहना. Agitated at the speed of 100 to 250 RPM round per minute. When अब हुआ क्या, यहाँ पे कल्चर होना शुरू हो गया. द कंटिन्यूअस कल्चर प्रोसेस इज बीइंग स्टार्टेड. द एक्सप्लांट इज बीइंग यूटिलाइजिंग इन द कल्चर सॉल्यूशन. उसमें जो कुछ भी न्यूट्रिएंट थे उनका यूज करना शुरू करेगा. यूज करके उसकी ग्रोथ होगी, मैक्सिमम ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे एक्सप्लांट ग्रोथ करेगा. सो दिस इज वेरी मच यूजुअल. The explant will utilize the nutrient whatever is present there in the culture solution, and when it is going to utilize the nutrient continuously, so definitely the nutrient solution what we were using earlier will deplete the nutrients. उसमें nutrients की कमी होना शुरू हो जाएगी. ऐसी condition में there will be a negative impact over the process of सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ द सिचुएशन हमको क्या करना होता है कि जब न्यूट्रिएंट की कमी होने लगे, ग्रोथ के ऊपर रिटार्डेड इफेक्ट दिखाई देने लगे, देन वी नीड टू टेक आउट द
freshly formed new cells, then we need to take out the freshly formed new cells from that medium and will be transferred into the new medium which is having the fresh nutrient supply. So when nutrient is declined in the medium, the freshly formed cells or tissues are regularly exported out into the new culture solution, new culture vessels, where we are adding the fresh media, so that the continuous growth of new plant, new tissues must be maintained, and that process of shifting of fresh cells into the new culture vessels, including the new or fresh media, is called as subculturing. मेन कल्चर से सब कल्चर अलग अलग प्लेट्स में डालते जाना, प्लेटिंग करते चले जाते हैं अपन। मेन प्लेट में एक बार कल्चर शुरू हो गया, उसको अलग अलग प्लेट्स में डालते चले जाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब कल्चरिंग। अब होता क्या है कि ग्रोथ होना शुरू हुई, जैसे ही ग्रोथ होना शुरू होगी तो वी नोज वेरी वेल साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर देयर, सो ऑक्सिन इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के और सूट सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए साइटोकाइनिन वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कंटिन्यूस ग्रोथ के कारण अब डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाएगा, रूट सिस्टम और सूट सिस्टम का रिजेनरेशन शुरू हो जाएगा। So root and shoot regeneration from the callus under the influence of auxin and cytokinin. So auxin will promote the root differentiation and cytokinin will promote the shoot differentiation. धीरे धीरे क्या होगा, बड़े प्लांट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा उसी में, उसी कैलस में, उसी कल्चर सॉल्यूशन में, उसी मीडियम में। ये बड़े प्लांट जब 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएंगे तो उस समय इनको कहा जाता है प्लांटलेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन दिस प्लांट्स गेट्स द हाइट ऑफ or size of 2 to 3 centimeter, so that time they are called as plantlets. They are called as what? Plantlets. Now these plantlets, when they are getting the height or size of 2 to 3 centimeters, are excised, वहां से बाहर निकालेंगे and will transferred into the auxin rich nutrient solution, so that it must ensure the maximum growth. समझ में आ गया? जब प्लांटलेट्स बन जाएंगे तो प्लांटलेट्स को वहां से बाहर निकालना और ऑक्सिन रिच कल्चर सॉल्यूशन में डालना है, so that it must maintain the maximum growth or maximum development. Now when plantlets are fully grown, now these plantlets has to undergo in the process of hardening. Hardening मतलब इनको actual condition of the environment में shift करना है, so that they must learn to fight the harsh condition of environment. अभी तक तो उनको बचा के रखा गया था, each and every condition we have maintained, but we cannot maintain the complete condition throughout the life of the plant. So they must learn, they need to learn how the conditions can be challenged, how the conditions can be tackled. So on such situation, all the plantlets are now shifted into the field, and here they are exposed to the natural environment, so that they must understand the harsh environment, harshness of the environment, and learn how to avoid such kind of the situation, how to develop such kind of the situations. And for the process they are kept under the reduced light and high humidity. So this is clear to you all? एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं द कंप्लीट टिश्यू कल्चर टेक्निक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आइसोलेटेड द एक्सप्लांट। हम जानते हैं एक्सप्लांट का मतलब द पार्ट विच आर अंडरगोइंग और विच इज अंडरगोइंग इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक, उसको बाहर निकाला। अब उसको दो तरीके से कल्चर कर सकते हैं, या तो कैलस कल्चर में या तो सस्पेंशन कल्चर में। अगर कैलस कल्चर में लेते हैं तो उसको एग्रोइज मीडियम में करना होगा। इन द कैलस कल्चर व्हाट विल फॉर्म द कैलस, इन द सस्पेंशन कल्चर द सस्पेंशन ऑफ द सेल विल बी प्रोड्यूस्ड। ये समझ में आ रहा है? एक्सप्लांट को लिया, दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ द कैलस कल्चर तो कैलस का फॉर्मेशन होगा, आइदर इन फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन कल्चर तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ द सेल का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों बाद में रिजेनरेशन में जाएंगे। अंडर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दे विल अंडरगो एंड दे विल फॉर्म आइदर सूट एंड द सोमैटिक एम्ब्रियो। इनसे क्या बनेगा? सूट और सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। सूट में रूटिंग की प्रोसेस प्रमोट कराएंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। सोमैटिक एम्ब्रियो में जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी। बाय द जर्मिनेशन एंड रूटिंग द प्लांटलेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड and these plantlets will undergo in the process of hardening in the natural field, so that they could face the natural environment. So that is what the process of tissue culture technique. We are moving some more practices of the tissue culture technique that already we have
noted down earlier only. So moving on to the next practice of the tissue culture technique. So I think this is clear to you all. What is there? Explant. Explant को culture करेंगे अपन एग्रोज मीडियम में तो कैलस कल्चर कहलाएगा, सॉल्यूशन सैंपल सस्पेंशन में करेंगे तो सस्पेंशन कल्चर कहलाएगा. दोनों का रीजनरेशन डिफरेंशिएशन सूट बनेगा, सोमेटिक एम्ब्रियो बनेगा, रूटिंग होगी, जर्मिनेशन होगी, प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन होना, एंड फाइनली द हार्डनिंग प्रोसेस इज बीइंग रिक्वायर्ड. मूविंग ऑन टू द सम मोर एस्पेक्ट, सम मोर रेशियो और सम मोर पॉइंट्स ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक. My dear child, I'm just going to discuss very important question for your examination. Remember, this question is a kind of gifted question. What I'm just going to discuss now, these two questions are the gifted questions. Many of the time the question is being asked in the examination, so that is why I just marked it the important question, that is called as meristem culture. Actually, meristem culture is an practical approach of the tissue culture technique. Normally in the beginning of the topic only we have discussed the tissue culture technique can be useful in obtaining the disease free clones of the plants from a diseased one. So that question is being asked many times. Describe the process. How can we isolate, how can we find out, how can we grow the disease free plant from a diseased plant? So this is what, how can we find out or how can we generate, how can we grow the virus free plant from the disease plant. So that is what, because virus free plant इसलिए बोला जाता है क्योंकि most of the infection in the plant is being caused by the viruses. So this is what we are just understanding. Very important question. तय मान के चलें कि question मिलना है एग्जाम में. So what is meristem culture? Development of disease free plant from the disease plant. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फ्री प्लांट. डिजीज फ्री बोले तो वायरस फ्री, पैथोजन फ्री, किसी भी तरीके के इन्फेक्शियस एजेंट से फ्री प्लांट का फॉर्मेशन करना फ्रॉम द डिजीज प्लांट. इवन दो द प्लांट इज डिजीज, देन टू वी कैन अचीव द हेल्दी प्लांट फ्रॉम द डिजीज प्लांट. यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे हेल्दी प्लांट प्राप्त करेंगे अपन किसी डिजीज प्लांट से. तो यू मस्ट बी रेडी विद दैट. सो कैसे किया जा सकता है? बाय द मेरिस्टेम कल्चर. that meristem culture, virus free plant को ऐसे करना. What is meristem? You knows very well. The apical tissues, the meristematic tissues are called as the meristem. So what kind of meristem, what kind of explant will be used in the meristem culture? The apical meristem. Apical meristem, the tip meristem, you know is very well. Three type of meristem is there: apical, intercalary and the lateral meristem. So here we are going to use the apical meristem. एपाइकल मेरिस्टम में दोनों तरीके के मेरिस्टम का यूज किया जा सकता है. एपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम का यूज करेंगे तो एपाइकल मींस टर्मिनल बर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं और एक्सिलरी बर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं. दोनों का दोनों यूज किया जा सकता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि why this is possible, that even though from a diseased plant we can recover the healthy plants by the meristem culture. तो उसके पीछे रीजन है कि the division of meristematic tissues is much faster than the multiplication rate of virus. Are you getting my point? Division of meristematic tissue is much faster than the rate of viral multiplication. क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए you must understand this is due to the high concentration of the ऑक्सिन. क्यों ऐसा पॉसिबल होता है, क्यों बहुत तेजी से मेरिस्टम डिवाइड करता है इन कंपैरिजन टू द वायरल मल्टीप्लिकेशन? बिकॉज the apical meristem is having the higher level of the auxin, so that higher concentration of auxin makes them faster multiplication. प्रोसेस सेम है. यहाँ पे एक्सप्लांट के फॉर्म में एपाइकल बर्ड लेंगे, स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करना, उसको कल्चर सॉल्यूशन में डालना, ग्रोथ, रिकवरी, हार्डनिंग, एवरीथिंग इज द सिमिलर. एग्जांपल आज तक यूज किए जा चुके हैं. बनाना का एक्सप्लांट बनाया जा चुका है, सुगर केन, पोटैटो, दैट वी ऑलरेडी डिड. Now next application, protoplast fusion. Once again very important question. This is what the protoplast fusion are the somatic hybridization. There is no need of having any kind of the hybridization. Usually hybridization practices is being done with the help of the reproductive cells or the germinal cell, and here we are going to perform the hybridization practices by the use of somatic cells. So that is what called as protoplasm fusion or protoplast fusion or somatic hybridization or protoplast culture. So what is that? Just try to understand. The fusion of protoplast of two plants belonging to the different varieties or species and genera. So fusion of the protoplast of two plants belonging to the different varieties or species of genera, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं हो, दो अलग अलग स्पीसीज के हों, अलग अलग जीनस हो, या उनका
ब्रीड अलग अलग हो, वेराइटीज अलग अलग हो, उन सभी का भी फ्यूजन कराया जा सकता है थ्रू द टिश्यू कल्चर टेक्निक। सो कैसे करते हैं, वन बाय वन वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहली जरूरत होती है इसके लिए प्रोटोप्लास्ट निकालने की। फॉर द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन व्हाट वी आर रिक्वायरिंग, वी नीड टू हैव द प्रोटोप्लास्ट। सो कैसे प्रोटोप्लास्ट निकालेंगे? सो फॉर ऑब्टेनिंग अ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द हेल्दी प्लांट सेल, वी नीड टू ट्रीट आउट द plant cell with some of the particular enzymes. These enzymes are pectinase and cellulase. Are you getting my point? प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? सेल वॉल लेस साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल मेम्ब्रेन तो हो लेकिन सेल वॉल नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी प्लांट सेल से, फंगल सेल से, बैक्टीरियल सेल से, जिनमें भी सेल वॉल होता है, अगर सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया जाए तो द स्ट्रक्चर व्हाट एवर इज रिमेनिंग मीन्स व्हाट, सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग सेल ऑर्गेनेल्स एंड द साइटोप्लाज्म, द लिविंग मैटर, is called as protoplast. So to obtain that protoplast, what we need to do, we have to digest the सेल वॉल। कैसे डाइजेस्ट करेंगे? सेल वॉल बनी होती या तो सेलुलोज की या तो बनी होती पैक्टिन की। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोज, पैक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पैक्टिनेज। यहां पे ध्यान रखने, दो वर्ड यूज करते हैं, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट। सो प्रोटोप्लास्ट मींस व्हाट? सेल वॉल लेस प्लांट सेल और फंगल सेल और द बैक्टीरियल सेल। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ओनली लिविंग मैटर ऑफ द सेल, मींस व्हाट? विदाउट सेल मेम्ब्रेन, दैट इज इंक्लूडिंग ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनेल्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो सबसे पहले हमने प्रोटोप्लास्ट रिसीव कर लिया बाय ट्रीटिंग द सेल विद द सेलुलेज एंड पैक्टिनेज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आफ्टर दिस अब जरूरत होती है इस प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने की। सो फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट कैन बी अचीव्ड बाय टू मैकेनिज्म, वन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफ्यूजन, अनदर वन इज कॉल्ड एज कीमोफ्यूजन। इलेक्ट्रोफ्यूजन में हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक वेव्स कैन बी गिवन फॉर द अल्टरनेटिव ऑर्डर। धीरे धीरे कुछ समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वेव्स दिए जाते हैं। कीमोफ्यूजन कुछ केमिकल से ट्रीट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जामिनेशन, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। ये केमिकल्स पूछे जाते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, कौन से केमिकल्स का यूज करते हैं। सो दो बेसिक केमिकल का यूज किया जाता है, वन इज कॉल्ड एज सोडियम नाइट्रेट एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। टू केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ केमिकल फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। दो केमिकल है, कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। दैट आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एक प्रोटोप्लास्ट का हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट हाइब्रिड इज कॉल्ड एज हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। यही आगे चल के न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा एंड दैट न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड बिकॉज सोमैटिक प्लांट वी हैव यूज्ड। सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन व्हाट स्ट्रक्चर विल फॉर्म? द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। दैट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट will lead to the development of the new plant and that new plant will called as somatic hybrid, and that process of formation of somatic hybrid by the protoplast fusion is called as somatic hybridization because we have not taken any of the cell that is reproductive in origin, but hybridization process is being completed by the use of somatic cells only. Remember, अब एक और खास पॉइंट है, इस सोमैटिक हाइब्रिड में दो तरीके के न्यूक्लियस हो सकते हैं। आइदर द न्यूक्लियस मे बी सिनकैरियन और इट मे बी हेट्रोकैरियन। सिनकैरियन का मतलब क्या होता है कि यदि केवल एक ही न्यूक्लियस है जहां पे दोनों प्रोटोप्लास्ट का न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सिनकैरियन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If single nucleus is present in the somatic hybrid, then it is called as synkaryon. और यदि दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं, दोनों प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस अलग अलग हैं, तो उस कंडीशन में अपन उसको कहेंगे हेट्रोकैरियन। सो इफ सिंगल फ्यूज न्यूक्लियस इज देयर, देन इट इज कॉल्ड एज सिनकैरियन। इफ टू अनफ्यूज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज हेट्रोकैरियन। नाउ नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने देखा सेल को क्या बोला, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट जो था, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट से न्यू प्लांट बना, उसको सोमैटिक हाइब्रिड बोला और प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। अब इस हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट को वास्तव में हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, बिकॉज साइटोप्लाज्म का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, बाकी किसी भी चीज का फ्यूजन नहीं हुआ है। सो दैट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड. Sometime it may be referred as the cybrid. Hybrid protoplast is called as cytoplasmic hybrid, or sometime it is called as cybrid. So my dear child, when we are going to appear in the NEET examination, so just take care of that. That cybrid means what? यदि इन दो, अभी हमने देखा दो न्यूक्लियाई थे, पेरेंट ए पेरेंट बी दो थे, तो उनमें से अगर किसी एक का न्यूक्लियाई डीजेनरेट हो जाए और सिंगल न्यूक्लियस ही बचे, तो उस कंडीशन में उसको अपन साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड नहीं कहते, बल्कि क्या कहते हैं? साइब्रिड कहते हैं. So this is clear. Hybrid protoplast
is called as cytoplasmic hybrid or hybrid. हाइब्रिड किस केस में, यदि दो न्यूक्लियाई में से कोई एक न्यूक्लियाई डिजेनरेट हो जाए तो उसको अपन कहेंगे हाइब्रिड. एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोमेटो. आपके बोर्ड एग्जाम में फ्लो चार्ट के साथ में पूछा जाता है पोमेटो के बारे में, तो आप बना सकते हैं. दैट आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द फ्लो चार्ट आल्सो. सो पोमेटो पूछा जाता है, तो पोमेटो इज अ सोमेटिक हाइब्रिड ऑफ टोमेटो एंड पोमेटो, लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज नहीं थी. द फर्स्ट हाइब्रिड वॉज डेवलप बाई द टोबैको फ्यूजन. टोबैको की दो स्पीसीज का फ्यूजन किया था, निकोसियाना ग्लाउका एंड निकोसियाना लैंग्सडॉर्फी. तो दिस इज व्हाट द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. मूविंग ऑन टू द फ्लो चार्ट, मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर. जैसे हम यहाँ पे देखते हैं दो सेल्स थी, दो पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल ए एंड पेरेंट सेल बी. टू डिफरेंट कलर्स आई हैव यूज फॉर दैट. दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इस समय इसको अपन सेल बोलेंगे. आफ्टर ट्रीटिंग विद द पैक्टिनेज एंड सेलुलेज, इस सेल को अपन ट्रीट करते हैं दो एंजाइम से. आइदर पैक्टिनेज, इफ फंगल सेल इज देयर तो पैक्टिनेज, नहीं तो सेलुलेज का यूज करेंगे. इससे इसकी सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी और अब हमको मिलेगा केवल प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है. तो प्रोटोप्लास्ट बी और ए मिलेंगे. प्रोटोप्लास्ट बी और ए मिलने के बाद में हम इनका फ्यूजन कराएंगे, दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन. प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन के लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको डालना है, या तो केमिकल ट्रीटमेंट देना है, दैट इज पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट. अब ये फ्यूज हो गए हैं, प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड बन रहे हैं. प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड होने के बाद में दो न्यूक्लियस आ गए यहाँ पे, दैट इज हेट्रोकैरियन कंडीशन. सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, दोनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो जाएंगे, सो दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज सोमेटिक हाइब्रिड. एंड दैट कंप्लीट प्रोसेस इज प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. माय डियर चाइल्ड, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. सॉरी, हियर प्रोटोप्लास्ट बी इज रिटन, बट दैट इज प्रोटोप्लास्ट ए. Okay, two different parents are there, so protoplast A and protoplast B. The last one for the today's topic is embryo culture. The embryo culture means culture of embryo. So young embryo को seed से बाहर निकालना, उसका cultivation करना by the application of tissue culture technique is called as embryo culture. So excision of the young embryo from the seeds and their cultivation by the tissues and tissue culture technique is called as the embryo culture technique. So this is what all about of the the tissue culture technique. आपको सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा ये करना है कि यू हैव टू गो विद द एप्लीकेशंस ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक. मेजर टू एप्लीकेशन आई हैव डिस्कस्ड टुडे, दैट इज मेरिस्टेम कल्चर एंड द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. दिस इज व्हाट द टू मेजर एप्लीकेशन. एंड इफ इन द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज देयर टू आइडेंटिफाई, टू राइट डाउन अबाउट द application or advantages of the tissue culture technique, so you need to go with these two only, the meristem culture and the protoplast fusion. Remember my dear child, we have completed the chapter 9. All the videos whatever is required I have just cleared, I have just posted on to the YouTube channel. You can go through that. It is my humble request, अगर आपको पसंद आ रहा है तो you just press the like button, subscribe and share it. Thank you.